गिट सीखने का प्लान है, पर सबसे पहले तो गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? चाहे आप हो विंडोज, मैक या लिनक्स यूजर, ये वीडियो है आपके लिए। हाय डेवलपर्स, मैं हूं योगेंद्र बीरे और आप देख रहे हो कोडिंग योगेंद्र बीरे। आज हम सीखने वाले हैं गिट इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्रबल शूटिंग टिप्स भी मिलने वाली हैं। So let's start with the Git installation on Windows. Open browser and search for download Git. Visit the first link, so it will auto detect it is a 64-bit Windows. So just download the software for Windows. So select for download 64-bit Git for Windows setup. So it will start downloading the Git software. Once downloading is done, double click it and run it. Just press next. Keep all the default settings. No need to change anything. Keep all the recommended settings. Just press next. Nothing to change. Next, next, and you need not to change anything. But yes, if I want to keep the default editor, yes, I can do that. So Visual Studio Code, I have set it to default editor. Then press next, 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 next. Nothing to change. Keep all the default settings, and once done, click install and just wait for installation. Once the installation is done, we are good to go. So installation is done. Launch git bash and finish. Let me give you a troubleshooting tip. If git bash नहीं ओपन हो रहा तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लो एंड एंटीवायरस अगर है तो उसको डिसेबल कर लेना एंड देन ट्राई करो. So let's start with the verification whether the git is installed or not. So I have opened the git terminal or git bash. So just type git --version. So it means git is installed on my Windows. Let's see how to install git on Mac. So we can install in 2 different ways. Option 1, use homebrew, that is recommended, and type brew install git. Option 2, directly download from Git official website. The software will end up with the extension of .dmg file. So once installation is done, just verify by typing git --version. So specific note, Mac में Git का older version already होता है, but new feature के लिए homebrew से install कर सकते हो. So let's see how to install Git on Linux, especially Ubuntu version. First, update your system, sudo apt update. Then install git by using sudo apt install git. Then verify whether the git is installed or not. Git --version. एक प्रो टिप आप सभी के लिए, लिनक्स पे गिट लाइट वेट और इजी टू अपडेट होता है. हर डेवलपर के सिस्टम में ये होना ही चाहिए, दैट इज मैंडेटरी. लेट्स सी पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स. वी हैव टू सेट ग्लोबल यूजर नेम एंड ईमेल. So let's see how we can do that. Open the git bash and type the command git config --global user.name and write your username, in my case Yogendra, and press enter. So let's set up the user email. So just write down the same command git config --global and then user.email and write down your email address and press enter. So we have successfully done the post installation steps. So let me just clear the screen and let's check the configuration. Git config and --list and press enter. So you can see username, I have set my username, user email address is also done. Golden tip, ये सेटअप हर गिट प्रोजेक्ट में यूज होगा, सो मेक श्योर ये सही हो. तो दोस्तों, आपके सिस्टम में अब गिट इंस्टॉल हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक गिट कमांड्स और कैसे एक गिट का प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करो गिट सेटअप डन लिख के. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो.